So this is the basically book of financial management by James Van Horn, and this is the chapter number 4, valuation of long-term securities, and we are going to discuss the question number 10. The question number 10 is basically about the calculation of uh, growth rate and dividend yield and capital gain yield of a common stock using constant growth dividend model. Constant growth dividend model is basically the situation in which it is said that the dividend is expected to grow at a constant rate फॉर एवर. जब कभी भी ये जिक्र होगा कि डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करेगा तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज़ होगा. और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का मतलब है कि वो फार्मूला जो कांस्टेंट ग्रोथ वाला है वो यूज़ होगा. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. This is the solution. I read the data of the question, and then we will start discussion on the solution of the question. Uh, the data is that just today the Faulty Foods Incorporation common stock paid a dividend of $1.4 per share and had a closing price of the 21. जो वर्ड है ना जस्ट टुडे, इसका मतलब है डी नॉट, यानी कि अभी आज की बात हो रही है. वेन एवर ही विल से दैट कंपनी विल पे अ डिविडेंड तो वो उसे D1 लिखा जाएगा. लेकिन जब कभी वो ये कहेगा कंपनी हैज़ रिसेंटली पेड, हैज़ जस्ट टुडे पेड अ डिविडेंड ऑफ $1.4, इट मीन्स दैट दिस इज़ डी नॉट. तो डी नॉट का मतलब है कि जो पे कर दिया गया माजी में, इस जब ये साल ख़त्म हुआ तो जब पे कर दिया गया, तो जस्ट टुडे का तो मतलब ये ना जब दे दिया है, जब एक दफ़ा दे दिया तो वो बात माजी की होगी, तो डी नॉट. और उसको आप कहें माजी की बात कहें या आज की बात कहें, एज ऑफ टुडे, या जो भी आप उसे नाम देना चाहें. आज की अगर बात होगी तो डी नॉट, और अगर फ्यूचर की बात होगी ना, company will pay the dividend after some point of time, it would be D1. So company has just paid a dividend of $1.4 and had a closing price of rupees $21. तो बेसिकली क्लोजिंग प्राइस जो होती है ना वो रिसेंट लेटेस्ट प्राइस होती है. मसलन फ्राइडे को स्टॉक मार्केट जो है वो क्लोज़ हो जाती है. तो फ्राइडे को जब स्टॉक मार्केट क्लोज़ होती है ना, तो अब सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, अगर तो हम सैटरडे संडे को कहेंगे कि यार शेयर की लेटेस्ट प्राइस क्या है, तो वो कहेंगे यार जो क्लोजिंग प्राइस है ना बस वही लेटेस्ट प्राइस है. तो यानी कि जिस पे लास्ट डे को वो ट्रेड हुआ है, तो ये लेटेस्ट प्राइस वही होती है. और सो पी नॉट इज़ द क्लोजिंग प्राइस, इट मीन्स दैट इट इज़ द करंट प्राइस, लेटेस्ट प्राइस. उन्होंने लेटेस्ट की जगह क्लोजिंग का वो वर्ड यूज़ कर दिया. इसका मतलब है वो उसकी करंट मार्केट प्राइस ही की बात हो रही है, मतलब पी नॉट. And then he says that the capitalization rate or required rate of return, yield, discount rate, कैपिटलाइजेशन रेट. अभी कैपिटलाइजेशन रेट की एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है. ये सारी चीज़ें एक ही हैं. और सो इट इज़ बेसिकली, अगर कॉमन स्टॉक की बात हो रही है तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस सूरत हाल में जब कॉमन स्टॉक होगा तो द डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ डिनोटेड विद KE. इट मीन्स दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी कॉमन स्टॉक, इट इज़ 12%. And he says that the dividends are expected to grow at a constant rate forever. ये जो एक वर्ड है ना कि dividends are expected to grow at a constant rate forever, इससे हमें पता चला है कि we have to use the constant growth model. And constant growth model means this formula, constant growth model means this formula of V is equal to D1 over KE minus G. Here we have the minus sign. So
this is basically the formula. एंड ये फार्मूला एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा अगर वो हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहे, लेकिन जब कभी भी वैल्यू के अलावा कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहे, चाहे वो ये हो या ये हो, तो फिर हमने वी हैव टू रिप्लेस द वी विद पी नॉट. तो इस फार्मूला में हमने यही करना है, क्योंकि उसने हमसे पूछा है सबसे पहले कि ग्रोथ रेट क्या है डिविडेंड्स का ग्रोथ रेट क्या है. तो अब चूँकि उसने हमें डी नॉट दिया है, तो आप याद रखें कि जो D1 आने वाले साल का जो डिविडेंड होता है वो होता है डी नॉट. जो भी आखिरी साल का डिविडेंड है, लेटेस्ट डिविडेंड जो पे किया गया है, वो इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट. तो जब कभी भी, अब इस फार्मूला में तो आपने D1 यूज़ करना है. अगर तो उसने यहाँ पे डायरेक्ट D1 दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड. इफ़ ही हैज़ नॉट गिवन यू द D1, यू विल हैव टू कैलकुलेट द D1 using this formula. So in this situation he has not given us the D1, so that's why I have written the D naught into 1 plus G, because we know that D1 is equal to D naught into 1 plus G. And because he has asked to calculate the growth rate, this G, and as we know that whenever he asks us to calculate any of these three things, we replace the V with P naught. So we have replaced the V with P naught. P naught is equal to D naught into 1 plus G over KE minus G. And here P naught is 21, it is given, and D naught is 1.4 into 1 plus G divided by KE is 12% or 0.12 minus G. So now we start solving it. These are basic mathematics step. We will move this to this side of the equation. It is being divided over here, and it will be multiplied with 21 on this side of the equation. Then we multiply 21 with this and 21 with this G. We multiply 1.40 with this and this thing, and we have multiplied, we have moved this thing to this side of the equation. whenever we जब हम इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे कोई चीज़ लेके जाते हैं तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है. ये देखें पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव वाली को इधर लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी. पर्पस ये है कि जी जो है इक्वेशन के एक साइड पे हो जाए. नाउ when we will divide 1.12 divided by 22.4, we will get the value of G, that is basically 0.05. Or when if you multiply it with 100, we will get the G in percentage. आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, it is equally acceptable. So the growth rate of the dividend is 5%. Now in second part he has asked what is the expected dividend yield. What is the expected dividend yield? So to calculate the expected in part B, to calculate the expected dividend yield, we have the formula of D1. The expected dividend yield is equal to when he has said expected, it means D1. हमें एक्सपेक्टेड के वर्ड से पता चला है कि हमने यहाँ पे D1 लिखना है. तो जब कभी भी वो कहता है कि अगर वो कहता है कि करंट डिविडेंड यील्ड बताएं आप, व्हाट इज़ द करंट डिविडेंड यील्ड, तो हम लिखते D नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट. लेकिन उसने कहा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, तो देन वी विल राइट D1 ओवर P नॉट. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ डिविडेंड यील्ड. अगर तो करंट की बात हो रही है कि करंट डिविडेंड यील्ड, तो हम लिखेंगे D नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट. और अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड की बात हो रही है तो D1 ओवर P नॉट. And we know that D1 is equal to D naught into 1 plus G divided by P naught. हमने अभी कैलकुलेट किया है G पार्ट ए में, जो कि था 5%, और P naught हमें क्वेश्चन के शुरू में दिया गया था. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.07
और अल्टरनेटिवली इट इज़ कॉल्ड 7%। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा 7%. And in third part he has asked us to calculate the capital gain yield. Remember, the capital gain yield is basically the G को ही capital gain yield कहा जाता है, वो हमने already calculate कर दी है. पार्ट सी में सिर्फ हम बता देंगे solution में कि this is basically G is basically capital gain yield. So we are done with the question number 10, and in next video we will solve question number 11. Do remember, do not forget to subscribe my channel. Thank you.